When the trials of this life make you weary and your troubles seem too much to bear, there's wonderful solace and comfort in the silent communion of prayer. Good evening and a very, very warm welcome to the 75th Hsnc Board's first ever film festival cinematic showreel where excellence meets the spotlight. Can we have a huge round of applause? Come on guys, you can do better than that. Where's the energy in the balcony? I can't see any energy. I'd like to begin today this very, very historic moment with a beautiful story that was narrated by our spiritual guru Dada J.P. Vaswani. And this story is about the power of human faith. There was a small 8-year-old boy and his father was a captain of a ship. And every time he would travel, he would tell his father that I also want to see all the countries of the world. One day his father took him along with him to the ship. This little boy went along with his father and saw so many countries. One night he was sleeping in the night and suddenly, just like the Titanic, of the ship, in the middle of the sea, the ship hit a rock. Small boy, half asleep, his father came and said, I am the captain of the ship, don't move from here, I will come to take you. Half in sleep, this little boy went to the pole, his father made him stand near the pole and said, don't move from here, I will get you. Slowly, slowly, all the passengers were being evacuated. The rescue boats were taking all the passengers one by one, and everybody felt sorry for this little boy standing at the pole. So many of them said, come with us, come with us. And he said, no, my father said to stand here and I will come and get you. Slowly, slowly, the entire ship was evacuated. Everything, the ship started sliding down in the water. It was an empty ship. The pole also started sliding down into the water. But this little boy kept holding the pole, and finally, just before the pole was about to go to the water, a helicopter threw a rope and he caught that rope and he was saved and went to the helicopter. Next day morning, they discovered all the people in the rescue boats were drowned. Only the people on the helicopter were saved. And that's the story for all of us. We all face so many challenges, so many things, but our spiritual guru says that our Father, God, has the best kind of saving for us, and we must never ever give up. Focus, concentrate. There's no stopping any of you from being a super success. So it's my absolute honor and privilege to welcome all these esteemed, wonderful guests to this very historic, momentous occasion. I'd like to begin with the person who has conceptualized this entire idea. He works tirelessly. 5 a.m. in the morning, he sends us a WhatsApp. From running marathons to changing the skyline of Mumbai, there are people in the world who create history. This man writes geography. In his new role as Provost Hsnc University, he does it all non-stop, a big role model, Dr. Niranjan Hiranandani. Come on guys, we know better than that. I'd really like to welcome the very, very talented film director and producer, Mr. Vipul Shah. Thank you so much, sir, for being here. If he recalls, he was here in 2002 when his first film, Aankhein, had released, and from then, Waqt Race Against Time, Namaste London, Namaste England, the Commando series, and of course, the highly acclaimed Kerala Story, showing his talent to the team, Mr. Vipul Shah. We actually have a family connection. I'm sure all my students know that he's the brother of Mr. Nitin Shah, very famously known for Manan Prakashan, whose books we've all been reading as textbooks. So thank you so much for being here today. A very, very big round of applause for our guest of honor, the very highly acclaimed actor, Mr. Jackie Shroff.
I was in school when the movie Hero released, so we can't tell you how many times we watched Hero, and I was never allowed out of the house after 10 o'clock. But when my parents used to live in Juhu, you had come for a shoot for a movie called S.W.A, which was India's first 3D movie, and me and my brother waited till 11:45 in the night in a line just to take your autograph. And you have the same warmth that you had then. Nothing has changed. Hats off to you and your absolute humility. Thank you so much for being here today. Thank you so much. A very, very big warm welcome to our partner, our supporter, patron of the college, noted environmentalist, BJP spokesperson, the person who has our back and is so good and supports us in every way, Mr. Asif Bamla. Thank you so much, sir, for being here. Thank you, sir. Come on, guys, a better round of applause. I want to welcome all the wonderful principals who have come. I can see them, and I'm sure you're all going to waiting eagerly for the results. Must tell you, your students have done a wonderful job. A very, very big warm welcome to Mrs. Shah, who's here to represent the schools. My brother principal from a sister college, Dr. Kishore Pishori, all the wonderful teachers, and of course, the wonderful students. But Niranjan sir, I have to tell you, you have conceptualized this wonderful idea, but there's one man who has worked tirelessly to execute this idea. Big round of applause for Mr. Hsnc Gokla. Thank you so much for being a pillar of support. And of course, my wonderful team with Dr. Meghna Kothari, Yamini, all my wonderful teachers, my support staff. But the biggest round of applause for the blood in our veins, my dear, wonderful students who are big, big source of support. So thank you. Welcome to each and every one of you who has been here. And I conclude, I'm sure all the wonderful colleges, we have people from the skill development, wonderful job that you're doing. And it's a wonderful initiative that all of us should be aware and create an awareness that dropouts and every community, free of cost, can get skill development so that they can all get good jobs. And that's what was the endeavor of this program. So thank you to each and every one of you. And I conclude with the famous words, aim for the moon so that even if you fail, you're somewhere among the stars. Thank you so much. First and foremost, the students who have done the great performance on that stage, the energy that I saw, wow, what a great job! I cannot tell you, I think that energy really comes in the college, so congratulations Dr. Neha Jagtayani for the leadership that you have shown in this college and the creation of all the ideas and the leadership that you have shown. So heartiest congratulations to all of that. Number two, that the things that have happened in this college continue to grow, and it's always very beautiful. We have many, many colleges, Jackie, and I must tell you that the principals of many of the colleges are here in front of us, and they're doing a fantastic job of the education that is taking place in Mumbai. And so congratulations to all of them and all the other colleges associated with our board. But you know, sometimes something is a little closer to your heart. And that is why this film program which was created is specially special. It is special because it takes care of the needs of the poorest of poor. People who have not got education which you have got or you are getting. People who are very handicapped. They may be young, they may be old, they may have no parents. Many of them are not keeping well. They don't even have money to pay for going to schools and colleges. But then they come to us, and in these areas we have been carrying out this skill. This last year we have skilled 4,000 poorest of poor people and taken place on that. But you know, in this day of Bollywood, in this day of media, in this day of social media,
We want to tell people how important it is to do all this activity. And hence, the competition that you have done and the response that has happened with the type of to all the 16 college participants who have done a fantastic job, really, all very fantastic. This is an age of communications, and there it is extremely important to share. I do a lot of travel overseas, and you know, many times when you go abroad, we now find a change in how they look to India. They look to India by saying the intelligent people are in India. When you go to America and others, the doctors are there, the engineers are Indians, the CEOs of big companies are also Indians. Hence, you, all students, have a great opportunity for the future in order to see that the education that you are getting in this college and the other colleges will give you an opportunity to rise up to the stars and the moons that your principal just talked to you about. So it's a fantastic thing that is continuing to happen in this age and time. But even before India was famous, Bollywood made us famous. When we even went to Russia, they would know the songs of Raj Kapoor. When we went to Egypt, also this was case. So the entire world, because of the music, because of the dance, because of Bollywood, and all the wonderful actors and actresses, and also the production and direction that is done by the Indian cinematography and completing all this activity, it has made India famous not now, decades ago, right from the time of partition. The wonderful movies and the wonderful songs and the lyrics and all these things are sung and heard all over the world, including Russia and even seen in China. So we are very, very proud that today we have a super duper actor with us here today. Jackie, thank you very much for coming to us and honoring this occasion to do a celebrity in his own right. But you know one thing, let me congratulate his humility, his niceness, his kindness to recognize the school that he came from, the background that he comes from, and meeting everybody, and humility, touching hold of hands of all the young people that he meets and all of us together. Your humility really is fantastic. I salute that not only a brilliant actor, but the humility with which you do. So young friends, when you grow up, learn from Jackie Shaw that even when you grow to be a titan in any field of activity, it doesn't matter what that field of activity is, learn to be having not only the acting craft of Jackie Shroff, but also his humility and kindness that he has expressed right from the time he landed in this entrance of National College till the time he has come to the stage. I have only heard his humbleness with which he has been talking. So let us learn from that. In the audience, we have a few people who have taken up the course of doing this training. I think there are six. Some of them I recognize as sitting in the 6th or 7th line. Those who are leading the operations for the skill development, including Mr. Kulkarni, please stand up and be recognized. I'm 73, but he's only 82. So that's the kind of commitment that he does. Even when he is not well, he will still go kilometers away to see that a center is started and is taken care of. And he refuses to leave this activity because he feels that it is closest to his heart. Hence, I congratulate each and every one of you for the wonderful activity which is done. To the board which has supported all the activities of 14 colleges, 45,000 students, 16,000 in schools, and 4,000 in skill development and growing. So all the very best to each and every one of you, and also especially to our principal for the program that has been created today, and all the participants who took it to do a great job. Keep it up. Give it your best. Dignitaries on the stage and dignitaries in the audience, and all the lovely youngsters here. I am not a guy who knows how to give speeches, so it's going to be pretty short, and I prefer that way.
I just want to say one thing, that I started as a backstage boy in Prithvi Theatres. I have not assisted anybody. I never went to any school. But I just became a director on my instinct, and I think you all have done similar stuff with the films that you all have made. So I just believe that if you have the dream, if you have the passion, and if you have the drive, then you all can achieve anything in the world. Nothing is impossible. As even Hiranandani sir said, Jackie sir will say the same thing to you, I'm sure. So all the best to you, and keep the spirit on, keep the fight on, and you will achieve everything. All the best, and God bless. I think first, he's asked me as a principal to ask him some questions. I think first, for his wonderful spirit, let's have a big 3 cheers. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Sir, I have to tell you, I have never seen so many students in my college that I have seen today. तो आए कहाँ से सब लोग? अपने कॉलेज के ही है ना? हम सुन सर, पहला तो बाबा हिरानंदनी साहब बहुत भारी आदमी, अच्छा काम करते रहने का मालूम ही नहीं पड़ेगा कब निकल गया, मगर काम रहेगा, काम रहेगा और दूसरे लोग सीखेंगे अपने से। और मैं तो वेट कर रहा हूँ, मेरा बाबा विपुल बाबा मेरे को कोई गुजराती पिक्चर में ले ले। ज़्यादा आता नहीं है मगर कर लूँगा। कीप डूइंग गुड वर्क। योर फाउंडेशन आसिफ बाबा दुनिया भर का अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। मैंने आपको कई सालों से देखा हूँ। नो, ही इज़ रियली गुड। आई मीन वाचिंग हिम। बहुत अच्छा। मैं ज़्यादा तारीफ करेंगा तो बुरा लगेगा, सही नहीं लगेगा। बट दिस गाइस जितने भी स्टेज पे बैठे सब तारीफ के काबिल है यार। सब लोग, तुम लोग भी बहुत भारी है, तुम लोग के अंदर दम इतना, बोमा बोम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा भी। और जो हाँ, एक आइटम तो जम मार के सीधे सामने आ गया था उसको, इतना मतलब माँ की कसम बोलता है, क्या पावर, क्या ग्रेस, क्या कोरियोग्राफी, बहुत भारी। नया जी आपका कॉलेज, हाँ मेरा बच्चा एक दिन आएगा, सबका बाप मेरे को मारेगा। मेरा बच्चा है, सब बच्चे हैं, कोई शक ही नहीं है बड़ू। मेरे को सब लोग जितने डांसर, मेरा बच्चा टाइगर ही दिख रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो जोश जो मेरे हर बच्चे में इधर है बाबा, एक जान लगा के तुम लोगों ने डांस किया, मान लिया, उस्ताद लोग मान लिया। मेरे को खाली वो वीडियो देना, थोड़ा मैं दिखाऊंगा मेरे बच्चे को भी, टाइगर को, देख बाबा कैसा बच्चे लोग दबा के करते, मेरे को देना, वीडियो देना। बाकी मैं क्या बोलूँ मेरे को मालूम नहीं। इधर पहले मैंने 2-4 चीज, पहला तो मेरा थोबड़ा पीछे चिटकाया दिख रहा है ना मालूम, वो क्या मालूम है डार्लिंग, वो सीरियस गेम है। बच्चे लोग ना अपने को ना शादी, अभी कोई टाइम नहीं है शादी का, अभी तुम लोग छोड़े, थोड़ा टाइम तो है, करना तो पड़ेगा डार्लिंग, करना तो पड़ेगा। ऐसा है, लगता है करना तो पड़ेगा, नहीं जिसको करने का करेंगे। मगर बच्चा पैदा करने से पहले खून को तपासना, नहीं तो बैंड बच्चा नहीं। माँ की कसम रे, मैंने सही बोला रे, मैं तुम लोग ना समझा नहीं। बच्चा पैदा होता है, थैलेसीमिया करके एक बीमारी है, बीमारी नहीं, इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, थैलेसीमिया। अगर आई और बाबा, माँ और बाप, अम्मी को और बाप को, दोनों को होगा ना, तो बच्चे का हर 15 दिन के अंदर खून निकाल के दूसरा नया खून डालना पड़ता है। उसको ट्रांसफ्यूशन बोलते हैं, डायलिसिस भी नहीं डालेंगे, यानी बाहर से खून डालना पड़ता है। मैं गया म्यूनसिपालिटी स्कूल में, देखा है बच्चे लोग का इधर नस नहीं मिलता है, इतना छोटा, उनके पैर में नस को खोल के डालना पड़ता है खून हर 15 दिन में, क्योंकि माँ बाप को मालूम ही नहीं था कि ब्लड टेस्ट करने का। तो मेरा यार बोलने का आदत खराब है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कॉमेडी नहीं, बहुत सीरियस है ये। ध्यान रखना डार्लिंग, थैलेसीमिया अवेयरनेस का तुम लोग भी अपने परिवार में, अपने किचन में, अपने भाई लोग को, दोस्त लोग जो शादी करने वाला बोल देना, भाई ब्लड टेस्ट कर लो। अगर उसको माइनर है, तेरे को माइनर है, तो तेरे को डॉक्टर से एडवाइस देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे का बैंड बजा देगा, समझ जाओ, और खुद का भी लग जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी ये तो ऐसे इसलिए मेरा थोबड़ा रखा पीछे। और तुम लोग याद रखना डाली, बोलना, ध्यान रखना डाली,
और बाहर हम लोग का मेडिसिनल प्लांट 250 मेडिसिनल प्लांट है। मम्मी बोलता है, नेहा जी ने बोला कि पूरा आपका बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, हर बॉडी के लिए कुछ दवा है उधर, है ना मैडम? है ना? तो इन झाड़ पाड़ के, ये झाड़ वाड़ मैं बोलते रहता हूँ, मैं लेके आके मैं सर पे रखता हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हो रही, पागल हो जाएंगे अपन, मगर ये झाड़ वाड़ का ही गेम है लाइफ में। अपने को, मैं अपने बच्चे को भी बोलता है टाइगर आई लव यू, मैं उसका कार्बन दे रहा हूँ मुँह पे। मैं अपनी औरत को भी, मेरे मम्मी को भी, मेरे बच्चे को भी मैं प्यार करता हूँ, तो अपन एक दूसरे को कार्बन देते, ऑक्सीजन नहीं देते, समझा ना? तो कोई, हाँ, तो समझ जाना, अगर एक रूम में बंद किया तो झगड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, बहुत प्यार मोहब्बत सब निकल जाएगा। इसीलिए झाड़ रखने का जो रात को भी देता है, ये इसका काम ही है बाबा का, स्पाइडर प्लांट का, कि रात को ऑक्सीजन दबा के देते। अपना वो ही अपना दोस्त है। ऑक्सीजन जब टैंक लगता है, मालूम है क्या होता है भाई लोग? पैसा देना पड़ता है, बेड नहीं मिलता है। जब फुकट में मिलता है तो शाना बन रहे है कि नहीं? तो ज़्यादा फुकट का माल है, इसीलिए ज़्यादा हंस के निकाल मत दे। अपने अपने बेडरूम में जब फोन रखते हैं ना, सर के पास, सर के बाजू में रहता था क्या, उसको भी रख लेना भाई, ये भी काम का चीज़ है। डिजिटाइजेशन, दुनिया बदल चुकी है मेरी जान, सही है, बहुत अच्छा है, अपन रेवोल्यूशन के हिस्सेदार है, और डिजिटाइजेशन चलते रहे मैं तो चाहता हूँ, मगर उसके साथ में झाड़पान भी चलते रहे, दोनों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग पावा। तुम खेलते ना, वो उधर बैठे ले, इधर बैठे ले, वही बाकी कुछ पूछना चाहता मैडम? आप मेरे को बुलाए इधर। मेरा क्या, मैं 11वीं पास है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चाहना कोई पढ़ो मत। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं पाया। आप लोग क्या, मम्मी डैडी माँ बाप ने पैसे दिए आप लोग को इधर इतने अच्छे कॉलेज में लाने के लिए, नसीब है भाई, क्योंकि कॉलेज करना कोई मजाक नहीं है। एक मेडिकल करने जाएगा तो मालूम पड़ेगा कितना पैसा का लगता है, समझा? एक इंजीनियर, मगर बहुत बड़ी बात है कि आप लोग का माँ बाप आपको पैसा दिया है और आप लोग इधर है। अपना नसीब नहीं था मगर प्रॉब्लम नहीं, अपना कान खुला था, अपन इज्जत करके, अपन ज़्यादा बोलने का नहीं, सुनने का ज़्यादा, सुनेगा तो अपने को समझ में आता है। तो मैं 11वीं पास किया, पैसे नहीं थे, मैं 2 साल इधर उधर भटक गया, मगर फिर लाइन पे आ गया। जब लाइन पे आया तो काम मिल गया, ऊपर वाले ने बोला चल काम दे दे। तो ये स्किल वर्क की बात है ना, मैं 3 महीने का कोर्स किया था, ट्रैवल और टूरिज्म का 3 महीने का डिप्लोमा किया था, और मेरे को नौकरी मिल गई थी ट्रेड विंग्स में। तो ये जो स्किल वर्क है वो मैं भी सिखा रहा हूँ, बाबा सिखा रहे 4000 लोग को, मैं 4 को भी सिखाता हूँ तो बहुत है, क्योंकि वो 4 लोग का मेकअप, वो 4 लोग को डांस, वो 4 लोग का गाना, उन लोग को योगा, फर्स्ट एड सीखा माँ कॉलेज में। ये बहुत ऊंचा गेम है नेहा जी, क्योंकि हड्डी टूटा अपने बच्चे लोग को, हर घर में नर्स मिलेगा। अगर हर बच्चे को अपने कॉलेज में फर्स्ट एड सिखाया तो, फर्स्ट एड सिखाओ। हार्ट अटैक हो गया, कोई पुराना बाबा लोग घर में होते हैं, जवान लोग को भी होता है, हार्ट अटैक हो गया तो वी शुड नो कि माँ को ये हो गया, अपन कैसे उसको बचाएं। अपने को क्या हॉस्पिटल का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैफिक में निकल रहा है तो फर्स्ट एड सिखाओ। हार्ट का, चोकिंग का, खाने के टाइम पे बच्चे लोग को ये सब कराने का जरूरत नहीं है। डेंजरस हंसने की बात लगती, मगर हंसते हंसते अगर अटक गया तो 1 सेकंड 30 सेकंड के अंदर गेम बच जाएगा। मेरे को बोलने को नहीं आता, इन लोग हंस रहे हैं, मगर जो समझदार है, जो माँ लोग है ना, आप लोग माँ है, मेरे तरह भी बाप है, मतलब उसको बोलना चाहिए बच्चे लोग चुप बैठ के शांतता नहीं खाओ, शांत बैठो, चबाओ और खाओ। ये नहीं कि यहाँ मोबाइल देख रहा है, इधर खा रहा है, उधर हंस रहा है, ये बाबा का राज है क्या? खाने की इज्जत करो दोस्त लोग। सही बोल रहा है, जितना चबाएगा ना उतना लगेगा अपने को बॉडी को, सीधा खपाखप खा के अंदर ऐसा डालने का नहीं। और सांस पे ध्यान देना बहुत दबा के, सांस और कुछ नहीं है जिंदगी में। हाँ, बहुत लंबा सांस ले। अभी तो मेरे को उसने झुका दिया है, मगर 90 साल की उम्र में 90 मेरुदंड होना चाहिए। 90 साल 90 मेरुदंड, मतलब सीधा लेना चाहिए और सांस को अपने मन के साथ लगा देने का, सांस को मन के साथ। और कोई जब बात करता है तो उसको बात करने देने का, अपन सांस लेने का। सुनते ले क्या बोल रहे ले शाना, सामने वाले को बोलने तो दे, पहले बीच में हाँ मेरे को ही मालूम है, मालूम बीच में वो तो टबोल बोल कर सुनो, बोलने दे, बोल थका बोल के अभी मैं तेरे को बोलता हूँ जो मेरे को समझ में आया। मैडम कुछ बोलो, नहीं हो गया मेरा गेम खत्म। आप कुछ पूछना चाहते नेहा जी? इनकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। इनकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आ रहे थे, ये फिर मुस्कुरा दिए।
होश में आने नहीं देगा भाई लोग। हाँ से वाह, बहुत शाना। हम बहुत अच्छा बेटा, ऐसे होना चाहिए, उम्र कम और शानपति ज़्यादा होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। और मेरे को मैडम बोलने का तो बोल, मैं गलती इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अबे रेसिपी दो यार। मैं खोलता हूँ बाजू में, नेशनल में मेरे को इधर कोने में जगह थे, मैं ऐसा आइटम खिलाऊंगा। अब मैडम को बोलो इधर, और एक ट्रस्टी साहब को भी बोलो, और मेरा अब आसिफ बाबा भी है। मैं इधर ही खोल देता हूँ कैंटीन, और मैं ऐसे ऐसे खिलाऊंगा ना तुम लोग को, तो तुम लोग भी बोलेंगे कुछ गया हड्डी में। अभी खीर खा रहा हूँ बीच अभी 2-3 दिन से, चावल उगाना पड़ेगा उसके लिए बेटे। तुम लोग को मैं लेके जाऊंगा, जिसको आने का मेरे फार्म पे। अब समझ है ना, अगर तुम लोग आने का जून में अपन डालेंगे, अक्टूबर में निकालेंगे, दिसंबर जनवरी में खाएंगे। उसको खीर बना ले, खजूर डाल के बे, खजूर होता है ना जो कॉकरोच की तरह दिखते वो कलर वाला, हाँ तो कॉकरोच कलर का खजूर, समझा, खजूर। और वो काला चावल 5-6 घंटा उसको रख देने का पानी के अंदर। वो जरा हार्ड होता है ना पेट के लिए, हमारे 1 नंबर है। हड्डी देख रहे ना, हड्डी की उम्र में भी अभी हड्डी, समझा, हड्डी के ऊपर गोश्त भी सही रहेगा, और चिकना इसका मस्का बॉडी रहेगा, मस्का। खीर खाने का बेटा, खजूर, दूध, इलायची और बादाम बाप के पास है तो ले। भाई ने बीच में से आवाज दी, बादाम, मेरा बादाम चना है बाबा, बादाम मिलता नहीं, अच्छा अगर मिल गया तो खाने का सही है तू भी, क्योंकि भेजा अपना कमजोर है, वो अपन खाते नहीं थे, बोलते थे मम्मी लोग बादाम खाओ, मगर बादाम के लिए माल भी तो किसी को चाहिए भाई। एक कबाब सूट आ गया था मेरा, ऐड कर रहा था मैं, एजुकेशन की बात करी मम्मी, हाँ जी आप लोग का तो माँ जैसे ये मदर है, ये वो आपको संभालता है, माँ संभालता है, इतना बच्चा एक है, बहुत मुश्किल है यार, 1-2 बच्चा संभालना मुश्किल, अपना पूरा गैंग है इधर, इतने मेरे बच्चे जो है। और आप लोग का एक टैलेंट है, खाली पढ़ाई की बात कर रहा है। मैं 11वीं पास किया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आज इधर खड़ा हूँ बोल बच्चन कर रहा हूँ, मेरे को बोलने को भी नहीं आता है, मेरे को कुछ याद भी नहीं रहता। अगर पढ़ लेता तो मैं शायद और इससे बेटर हो सकता, मेरा दिमाग कॉमर्स में रहता। मैं खाली आर्ट स्टूडेंट रह गया। आर्ट के लिए मैं जितना मेरे को संभाले लोगों ने, टेक्नीशियन का गेम है, फिल्म मेकिंग, एक्टर का नहीं है, टेक्नीशियन का ध्यान रखना बच्चे लोग। कैमरामैन अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर बाप होना चाहिए, डायरेक्टर से दादागिरी नहीं करने का कि मेरे को ऐसा करने का वैसा करने का, डायरेक्टर का सुनने का, राइटर होना चाहिए, बराबर काम करिए, नहीं कुछ भी कोई फालतू लाइन देके उसको बोलता है कि यार माँ ये क्या तेरे आँख में आंसू, बोले इसमें जादू डाल दो, इसमें क्या जादू डालूं, नहीं माँ मुझे भूख नहीं, इसमें भी जादू डालो। ऐसे लाइन वाले, टपोरी लाइन वाले नहीं चाहिए, राइटर 1 नंबर होना चाहिए। मेरे पीछे बैठा था कौन, स्क्रिप्ट राइटर कौन है आप लोग में से, हाथ दिखा ऊपर, ये मैं बैठा और पीछे देखा, मैं बोला स्क्रिप्ट राइटर बहुत रेयर है, जहाँ भी मिल गया उनको संभालो स्क्रिप्ट राइटरों को। राइटर पहला सही, उसके बाद में टेक्नीशियन, एक्टर है अपना थोबड़ा लेके आएंगे, अपनी सिंसियरिटी, अपना आवाज़ वो सब लेके आएगा, मगर उसको संभालने वाला। अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, मैं अगर चीज़ कुछ बनाता हूँ और मेरे को बेचने का है, उसको बेचने वाले अच्छे होने चाहिए छोटे। तो मेरा थोबड़े को कौन निकालता है, मेरे को क्या बना के दिखा रहे, लाइट्स कैमरा एक्शन तो लिखा हुआ है, मगर उसका मतलब समझना चाहिए बे, लाइटिंग क्या है, कैमरा क्या है, एक्शन क्या है, समझा बाबा लोग मेरे को। हाँ अपने को एक्टिंग करते रहे, अपने को बाकी के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टेक्नीशियंस, याद रखना टेक्नीशियन बनो, एक्टर हो जाएगा। और जिसको एक्टिंग करने का पहले ज्वाइन करो, असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, ताकि अपने को समझ में आएगा कौन क्या है। बाकी यार पका दे रहा हूँ मैं, कुछ ना है, आप आ जाओ। नहीं पहले वो पढ़ाई की बात की, पढ़ाई सब, आई लव यू टू बाबा, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मज़े लो। और आपको शेर पसंद है मेरा, थैंक यू, जय हिंद जय महाराष्ट्र।